Good morning, sweet kids. How are you? I hope you all are fit and fine with your parents. Today I will make you understand that how to determine big and small. Listen, students. I will make you understand that how to determine big and small. आज मैं आपको बिग एंड स्मॉल बड़ा और छोटा समझाऊंगी. ओके किड्स? In the first picture you can see there is a lion and a mouse. These two animals are considered as big and small. आप देख रहे हैं ना, लायन बिग है और माउस स्मॉल है. Whereas a lion is considered as big and mouse is small. So you can understand the concept big and small. In the next picture you can see two balls. The orange color ball is big. It is a basketball. And the green color ball is small. आप देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें दो बॉल्स हैं. ऑरेंज कलर बॉल बास्केटबॉल है और ग्रीन कलर की सिंपल बॉल है. यू कैन प्ले विद दीज टू बॉल्स बट यू कैन प्ले विद बास्केटबॉल इन द ग्राउंड. बास्केटबॉल से आप ग्राउंड में ही खेल सकते हैं. Whereas you can play with small ball in porch. और स्मॉल बॉल से आप अपने घर के पोर्च में भी खेल सकते हैं. So understand big and small, students. In the next picture you can see there is a chimpanzee and a monkey. Chimpanzee is big in size and the baby monkey is small in size. You can see chimpanzee बड़ा है और monkey छोटा है. Okay kids? In the next picture you can see there is a bus. It is a very big in size. Many people can sit in this bus. बस बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं. And the other picture is scooter. It is a small in size. And you learn when you come at school by school bus, many children sit with you in the bus. जब आप स्कूल आते हो स्कूल बस से, तब बस में आपके साथ बहुत से बच्चे बैठते हैं. सो इट इज़ वेरी बिग. एंड द पिक्चर ऑफ स्कूटर इज स्मॉल इन साइज. सो इट इज़ अ स्मॉल साइज व्हीकल एंड ओनली टू पीपल कैन सिट ऑन दिस. सो बस इज बिग एंड स्कूटर इज स्मॉल. In the next picture you can see there is a mama teddy and a baby teddy. Mama teddy is big and baby teddy is small. आप देख रहे हैं ना, मम्मा टेडी बड़ी है और स्मॉल टेडी छोटी है. Children, look at your mama. She is big and you are small. आप छोटे हो ना अपनी मम्मा से. So you understand big and small. In the next picture you can see houses. The building of houses is very big. Many people can live in this building. आप देख रहे हैं ना, बिग बिल्डिंग, बहुत सारे फ्लैट्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं. There are separate flats for the people. इसमें सेपरेट फ्लैट्स, अलग अलग छोटे घर बने होते हैं, पर उनका एंट्रेंस गेट सेम रहता है. Whereas the other picture of a small house.
In this small house, only 4 or 5 people can live. और दूसरी पिक्चर जो है वो छोटे से घर की है, स्मॉल हाउस की, और इसमें बहुत सारे लोग नहीं रह सकते. इसमें ओनली 4 और 5 पीपल ही रह सकते हैं. So you can understand the concept of big and small. In the next picture, you can see a big dinosaur, and on the top of the big dinosaur, there sit a baby dinosaur. आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, बहुत बड़ा डायनासोर है येलो कलर का, और उसके टॉप पर उसका बेबी डायनासोर, छोटा सा डायनासोर बैठा है. And you can see it is small in size compared to big one. और जो टॉप पर बेबी डायनासोर है वो बिग डायनासोर से बहुत छोटा है. येलो डायनासोर इज बिग and green dinosaur is small. In the next picture, you can see a big tree. It is very big in size. We get flowers, leaves and fruits from the big trees. And the other picture is a small plant. It is very small. We cannot get anything from this plant because it is very small. इस पिक्चर में आप एक बड़ा ट्री देख रहे हैं, बड़ा पेड़ और एक छोटा पौधा. बिग ट्री से हमें क्या क्या मिलता है? फ्लावर्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, और फ्रूट्स. आप मैंगो एप्पल खाते हो ना, वो भी हमें ट्री से मिलते हैं. और अदर पिक्चर जो स्मॉल पिक्चर है वो एक छोटे से प्लांट की है. प्लांट से हमें कुछ नहीं मिलता, वो तो इतना छोटा होता है, उस पर फ्रूट्स आते ही नहीं हैं. तो दिस इज़ अ बिग ट्री एंड दिस इज स्मॉल प्लांट. In the next picture, you can see a big pencil. You can easily hold it and you can write with this. And other is a small pencil. It is small in size. बच्चों, बड़ी पेंसिल से आप आसानी से अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो, आसानी से उसे पकड़ लेते हो और लिख भी लेते हो अच्छे से. लेकिन स्मॉल पेंसिल को आप होल्ड नहीं कर सकते ना अपने हाथ में, और उससे आप लिख भी नहीं पाओगे. बिकॉज इट इज़ स्मॉल इन साइज, यू कैन नॉट होल्ड इट प्रॉपरली एंड ऑल्सो कैन नॉट राइट विद दिस. सो यू अंडरस्टैंड द बिग एंड स्मॉल? Okay. I hope you all understood the concept of big and small. Now let's do some activity. You will enjoy a lot. Here is a drawing of circles. Big circles. There are 4 big circles. Number 1, number 2, number 3, number 4. And there are 4 small circles. 1, 2, 3, 4. Understand? इस ड्राइंग में बड़े सर्कल्स हैं और छोटे सर्कल्स हैं. Now here is a tray of cuttings of papers. In this tray, the cutting of big circle and the cutting of small circles. Okay kids, you have to keep the cuttings of circles in this drawing. Big circle in the big circle drawing and small circle in the small circle drawing. Okay kids, understand? Now let's start the activity. Take one big circle and keep it on the drawing of big circle. Then take a small circle and keep it on the small circle drawing. Then take a big circle and keep it on the big circle drawing. Then take a small circle and keep it on the small circle drawing. Then take a big circle
and keep it on the big circle drawing. Then take a small circle and keep it on the small circle drawing. Then take a big circle and keep it on the big circle drawing. Then take a small circle and keep it on the small circle drawing. Complete the activity. Okay, kids? Let's do other activity. Here are two jars. One is big jar. It is big in size. And the other is small jar. It is small in size. And here is a tray of some big things and small things like big doll and a small doll, like a big glass and a small glass, big clutcher and a small clutcher, big box and a small box, big red color and a small red color, big comb and a small comb, big little toy and a small toy, big car and a small car. Understand? You have to keep these things in these jars. Big things you will keep in big jar and small things you will keep in small jar. Understand? Now let's start. Take one big thing and keep it in the big jar. And small thing you will keep it in the small jar. Take one big thing and keep it in the big jar. Take a small thing and keep it in the small jar. Take one big thing and keep it in the big jar. Take a small thing and keep it in the small jar. Take a big thing and keep it in the big jar. Take a small thing and keep it in the small jar. Take a big thing and keep it in the big jar. Take a small thing and keep it in the small jar. Take a big thing and keep it in the big jar. Take a small thing and keep it in the small jar. Like this. Keep it in the big jar. In the small thing, in the small jar. Here is a big car. Like this. And small car in the small jar. Understand? And you will enjoy? Yes? Okay, kids. I hope you all enjoy a lot these activities. So this is end of this session. I request to parents, please arrange these things for the kids and let them do the activity so that they learn the concept of big and small. Okay, kids? Take care. Stay home. Stay safe. Bye-bye.